some people still come to me ki Parul, it's now third year, haven't started anything. So it's not late to be start, you have to be just consistent. And अगर आप टाइम मैनेजमेंट करो 1 hour 2 hour to DSA and 1 hour 2 hour to development, तो तब भी हो जाएगा. In 6 months you can achieve and get to a good level, but only thing you have to do is the consistency part. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing good. We are back with a new video. Today we have a very special guest with us, Parul. Parul is someone who has cracked the DESIS Ascent Educare program, which is a fellowship program given by DE Shaw. For all of those people who don't know what exactly this program is, it is a mentorship program wherein you get mentorship from the engineers who work in DE Shaw. It lasts for 6 months, and the best part is that you also get paid stipend during this entire program. And Parul is someone who has cracked it, so she will be telling us exactly how she did it and what all selection criteria does this company follow and how you guys can also crack it. So do make sure that you watch this video to the end. And before moving forward, take a moment to subscribe our channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. So welcome, Parul. Thank you for taking out time to do this with us. Can you quickly introduce yourself for our viewers? Okay, hello Am and hello everyone. So yeah, basically as ma'am already told you, I'm an ex-DESIS Ascent scholar and qualified that in the 2022 part. And currently, like talking about my technical skills, I'm comfortable with C, C++, and Python programming language. And currently, like in my second year, I have mostly done DSA and the development part, mainly in the front end, but currently focusing on the back end and an AI/ML enthusiast, exploring the computer vision domain right now. Great, Parul. So you cracked this internship in your second year of college, right? और आप graduation भी computer science IT में ही कर रहे हो, right? और आप काफी young हो अभी, तो can you tell us like how did you develop this interest in pursuing a career in coding? Tell us a little bit about it. Yeah. I'm actually telling the reality. My first year it was all online, and I didn't know that what the coding is. I only know that the C programming the college will tell us. But as soon as completed my first year, I got to notice that there are a lot of things to explore in the tech domain. So that's the thing when I started exploring the tech domain and doing the things other than the people to compete. All those, like in my 11th and 12th, I was not from the computer science background. So that's why I faced a little bit difficulty in competing with the people who know coding from before and Python and all, which are taught in our like 11th and 12th class. So I just started coding after completion of my first year. As I started, so as soon as I entered my second year, I started with the DSA. Started like in my third semester, my subject was also DS subject was also there. So I started learning from my college and also from the Love Bubbers DSA playlist. That helped me to incur a habit of doing the DSA problems on the lead code. In the starting, I was not knowing that कि like lead code में C in C out नहीं लिखना होता, printing statements नहीं होते. It's all about the logic जो आप लिख रहे हो. Then उस सीरीज को देखने के बाद, स्टार्ट करने के बाद, I got to know कि अच्छा इसमें ऐसे लिखते हैं, इसको इस वे में अप्रोच करते हैं. लाइक कॉलेज वाले तो बताते हैं कि इंट मेन के साथ कैसे लिख रहे हैं, प्रिंट कैसे कर रहे हैं. उससे मुझे आइडिया लगा कि DSA एक्जैक्टली करना कैसे. Then I switched to the lead code and started learning from many resources. ऐसा नहीं था कि I was stick on that particular resource, जिससे जो टॉपिक अच्छा लगता था, जो समझ आता था, उससे पढ़ना शुरू करा. So I started DSA in the month of June only. So yeah, in month of May and June only, as soon as my first year end. तो उसके बाद से मुझे थोड़ी सी हैबिट आने लगी. एंड ये अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर तक लाइक ऐसा था कि मेरे लीड कोड पर 150 प्लस क्वेश्चंस हो गए थे ऑलमोस्ट. तो ये था कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मेरी काफी अच्छी हो गई थी. एंड अदर थिंग इज आई स्टार्टेड मेकिंग प्रोजेक्ट्स इन दी समर वेकेशंस ओनली. So I have some good projects in like some basic one only a first year student can do. I will not hype up that बहुत ज़्यादा कर दिया था and all. अब जितना एक बेसिक एक फर्स्ट ईयर के बच्चे को आना चाहिए उतना मैंने अपने समर वेकेशंस में कवर अप कर लिया था. ओके, कूल पारुल. सो लाइक यू मेंशन, आप सेकंड ईयर में आपने लाइक समर्स में प्रोजेक्ट्स भी बनाने शुरू कर लिए थे और डीएसए के लीड कोड में जाके आपने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे. तो अबाउट दिस मेंटरशिप प्रोग्राम, लाइक हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट इट? किसने आपको बताया? और आप थोड़ा सा डिटेल में लाइक एक्सप्लेन कर दो कि क्या इनका इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस होता है और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, मतलब इन व्हाट ऑल राउंड्स व्हाट डू दे आस्क?
Okay, so starting with the how I got to know about this opportunity is that my senior sent this link. We have a link, WhatsApp group in our college. In which senior sent all the opportunities that are for them or that are for their juniors. So I got to know about that, and one of the my senior was a fastest follower for this. So I contacted her that Didi, how did you able to do it? And also when the applications started, I just started filling out the forms. And like उस टाइम पे क्वेश्चन था कि why you want to be a part of this session. This time I have seen that they were asking for something like achievements and all, what project you have did. So past year ये चीज़ नहीं थी. It was a question like subjective कि आप क्या कर रहे हो. तो that time chat GPT was also not there. So I have just written it on my own. And क्या कि उसमें I focus mainly on the finance domain, as a girl today told me that they will be asking for the SOP, the same question. So the first suggestion would be that your answer should center and focus around something finance, as D-Shaw is a fintech company. So it like focuses mostly on the finance. So I have just written that statement of purpose, like I was keenly interested in finance. Like, तुम दिखाओ कि तुम्हें finance ही याद हो, मतलब बहुत ज़्यादा है. I have written that from my childhood I was keenly interested in exploring how the things work, how transactions occur. So like I want to combine the technology and my skill set, and I feel that I'm the best fit for this because I'm interested in this particular domain, and I will be able to explore more and more about it. So yeah, so this was the main like tip for the application process. If you get to know about that SOP statement, if you have to fill it. And the second is कि resume selection हुआ था, तो मोस्टली 90% पीपल को आ गया था कोडिंग का टेस्ट का लिंक. अगर आपका रेज्यूमे बहुत ज़्यादा ब्लैंक है तो ही नहीं करते, बट कोडिंग लिंक तो मोस्टली आ ही जाता है जितना है. तो कोडिंग लिंक था. एंड ऑन दैट नेक्स्ट इज कोडिंग टेस्ट. तो कोडिंग टेस्ट था अराउंड 60 to 70 मिनट्स का, आई गेस. आई डू नॉट रिमेंबर इट करेक्टली. सो देयर वर 2 कोडिंग क्वेश्चंस. वन इज बेस्ड ऑन द एरे एंड सेकंड is based on the hashing plus strings. Like hashing में जैसे जैसे हम maps use करते हैं SQL. So I was fluent in C++. So I used some map kind of concept. It was hashing kind of thing. And array, what was the array question? First is the easy one according to the lead code, and second is something medium, lead code medium. The difficulty level was that. And there were 6 aptitude questions. Like they were so basic कि आप कोई भी कर लेगा उसको. If someone knows something reasoning and all. Aptitude थे, कुछ थोड़ा बहुत एज का भी पूछा था, कुछ थोड़ा सा क्वांटिटेटिव भी था, 2-3 ऐसे करके ये कोडिंग टेस्ट में था. And in that coding test, I solved the first one, all the test cases, and the second one, 9 out of 12 cases. 12 test cases passed in that case, but I got the selection made after that. Okay. And I was the only one to get in my college after that. Okay. So yeah, it was and another round was technical round, in which they do not expect second year people to do the live coding as we do for our internship season, like in the summer. Okay. They only expect कि एक सेकेंड ईयर के बच्चे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसको कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस वे में सोच रहे हैं. तो फर्स्टली तो मेरे को लगा कि CS फंडामेंटल्स पूछेंगे, नॉर्मल ऐसे एक कन्वर्सेशनल होगा. बट देन like one day before the technical interview, I got to know that it will be a code pair round. So it was on HackerRank, so a screen displayed in my front. So the interviewer wrote some code and like something approach a question ki this is the example test case and all. So how you will do it. But yeah, बहुत basic सी चीजें थी. I guess I can say that these are topics cover something strings, linked list, stacks, and mostly the thing which in my interview attracted the interviewer is that I know the time complexity and the space complexity of all the sorting. Actually, interviewer asked me that you know about the sorting, quick sort. I guess yes, I explained everything, and I also just told him that हाँ ये time complexity भी होती है, space complexity भी होती है. उस टाइम इतना नहीं पता था, but yeah, I did कि मैं पढ़ लेती हूँ जितना कुछ important है, asking my seniors की interviews में कैसे क्या पूछते हैं. एंड ऑल्सो फिर इंटरव्यूअर ने पूछा समथिंग लाइक होता है ना कि टिप ऑफ द पॉइंट, कि वो जो पूछे अगर आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा आता है तो आप बोल दो कि हाँ आपको आता है. तो ही आस्क्ड मी अबाउट क्विक सॉर्ट एंड देन आस्क्ड मी तुमको कितने सॉर्टिंग आती है, कितने तरीके आती है. आई जस्ट जितना भी मैंने GFG का एक लिंक खोला था, मैंने उसमें जितने भी लॉजिक्स मुझे लगे कि हाँ हमारे करिकुलम में आगे हैं या पहले हैं, मैंने यूट्यूब से सारे के सबके लॉजिक्स पढ़ लिए थे. एंड देन आई सेड कि हाँ मुझे ये आते हैं. तो ही आस्क्ड मी लॉजिक्स ऑफ सम टाइप्स ऑफ
sorting and then asked me कि सबकी time complexities and space complexities पता है. I said हाँ सब पता है, सब मैंने याद कर दिया था. I just told everything. So that attracted the interviewer most and he was so impressed at that time. So that was yeah. Okay. Great. Yeah. So 2 interviewers were there in the technical interview, and after that the last interview round was the HR round. So it only asked that how you will be able to manage the time, why are you interested in this particular opportunity, what are your strengths and weaknesses, what if you will not be able to handle it. So these kind of things. अच्छा ठीक है, तो काफी सारे राउंड्स हुए हैं, आई मीन प्रॉपर Yeah. मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए. सो पारुल, लाइक यू मेंशन कि एक कॉलेज टाइम पे ही होता है, राइट? एंड सो इट इज आल्सो अ 6-month प्रोग्राम. तो हाउ डज अ स्टूडेंट मैनेज हिज टाइम? मतलब कॉलेज परमिशन दे देता है, एंड इज इट समथिंग जो आप उनके ऑफिस में जाके करते हो या फिर लाइक यू कैन डू इट फ्रॉम योर होम? नहीं, we can do it from our college only. So it's like ना mentorship plus you can get stipend and exactly इसका flow ऐसा जाता है पूरे mentorship का कि आपको classes around 6 to 9 होते हैं, like week and होते हैं mostly Saturday and Sunday. तो मोस्टली कॉलेजेस के तो सैटरडे एंड संडे ऑफ होते हैं एंड आई एम फ्रॉम वनस्थली विद्यापीठ एक्चुअली. सो यहाँ पे ट्यूसडेज को छुट्टी होती है. तो इट वाज सो हेक्टिक फॉर मी टू मैनेज एंड सैटरडे संडे में क्लास करके आती थी कॉलेज टिल 5 एंड देन आई यूज्ड टू डू दीस क्लासेस ऑफ 6 to 9. सो बेसिकली फ्लो ऐसे जाता है कि दे स्टार्ट विद समथिंग लाइक Git and GitHub, like which is the most important thing for a developer to know. Startingly they started with this. They taught us the Linux, how to use the Linux command. So in my second year, as abhi I entered in my 5th semester, तो अब जाके ये कॉलेज वाले तो अब सिखा रहे हैं, but I know that from my 3rd semester only कि how to use Linux and all. I have that set up in my laptop, and then they teach us something subjects like OOPS which are taught in our 4th or 5th semester. तो पहले ही पढ़ा दिया सब कुछ, and then they gave us option for the electives that हमें क्या choose करना है. DBMS, Java and something like C++ is there. So I know C++. So then I selected the Java. तो मुझे वो तभी आ गया था. तो these बहुत benefits हैं कि आप बहुत ahead रहोगे. अगर आपका selection हो गया तो you will be ahead of everyone in this domain. तो and वो करा, and then they taught us that system architecture and designing की how like अगर हम कुछ design कर रहे हैं तो उसका क्या flow जाना चाहिए. टेस्टिंग दे taught us कि लाइक इंस्पेक्ट करके कैसे टेस्टिंग होती है, कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, कैसे गेट आ रही है, कैसे आप लोड चेक कर रहे हो चीज़ों का. तो दे taught us मोस्टली एवरीथिंग. तो एक सेकेंड ईयर तक आ जाना चाहिए स्टैंडर्ड. एंड द मोस्ट थिंग मोस्टली मतलब लाइक जो था ना वो बेस्ट पार्ट यहाँ का कि स्टार्टिंग यू आस्क ना कि ऑफिस से होता है या यहाँ से होता है. तो दे कॉल्ड अस इन द इनॉग्रेशन फॉर 2 days. It was all sponsored trip. They all booked, it was all sponsored trip, and they booked our flights, they booked our hotels, they took us to the office and showed that how their culture is, what is the office culture. And at the last they have given us the 6 weeks project, which like it was a major project actually. This works as there are 40 girls selected from each year. 40 girls for second year, 40 girls from third year. So they made teams of 5 members, and one mentor is assigned to them, study group mentor. Yeah. Okay. So at last they had given us the project for the 6 weeks. We had just made up a project, and at last we have to go to the office and then do a presentation. Like जैसे internship में होता है कि आप project पे work करते हो, and at last आपको presentation देनी होती है कि आपने कैसे बनाया, क्या बनाया. तो उस टाइम पर ही क्या हुआ कि माय मेंटर वाज सो गुड, एंड लाइक वो 1-1 2-2 बजे तक रात में हमारे साथ जगे रहते थे कि कर लेते हैं, करवा देते, तुम्हारा काम हो जाएगा. पारुल, ये जो मेंटर्स होते हैं ये दी शो में लाइक एम्प्लॉइज होते हैं जो काम कर रहे होते हैं आपके इंजीनियर? यस मैम उनके एम्प्लॉइज होते हैं. एंड मतलब दे वर सो गुड कि थोड़ी सी हमारे से 1-2 साल एज में बड़े होते, तो दे कनेक्ट विद अस टू कि हाँ हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी थी. तो दे कैन मतलब हमारे मेंटर्स ने तो कितनी बार वर्क फ्रॉम होम लिया कि तुम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, 4 दिन बाद दिखाना है, तुम जल्दी करो जो कर रहे हो. मतलब दे असिस्ट यू एवरीवेयर. सो बहुत ज़्यादा ही वो था कि दैट इज़ दी वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट इन माई रेज्यूमे राइट नाउ, बिकॉज आपको पूरा एक फुल स्टैक डेवलपमेंट आ जाएगा कि कैसे एग्जैक्टली हो रहा है.
लाइक गिट एंड गिटहब हम लोगों ने पढ़ा मेंटोरशिप में, बट एग्जैक्टली उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम उस 6 वीक्स प्रोजेक्ट में सीखे कि एग्जैक्टली होता कैसे है, क्या एरर्स आ रहे हैं, क्यों कुछ करना था, क्या नहीं करना था, बहुत सारी गलतियों से हमें सीखने को मिला. एंड एट लास्ट वी वेंट टू द ऑफिस फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी. वी जस्ट प्रेजेंटेड फॉर दैट प्रोजेक्ट एंड बहुत सारी मस्ती भी की. दे जस्ट कॉल्ड अस एंड होटल एंड ऑल सब कुछ स्टे था. दे जस्ट हैड given us some time to play some games and all resorts में, तो काफी कुछ अच्छा था. ओके, तो पारुल ये 6 महीने चली थी ना पूरी मेंटरशिप प्रोग्राम Yeah. तुम्हारा? Yeah. ठीक है, तो उसमें यू लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, लाइक यू मेंशन्ड, एंड ऑब्वियसली इट हैज हेल्प्ड यू टू लर्न थिंग्स फास्टर, और आप अपने क्लासमेट से काफी आगे हो, मतलब कुछ चीज़ों में जो कि आप ऑलरेडी जान चुके हो एंड दे आर लर्निंग नाउ. एंड आई ऑल्सो read on your LinkedIn that you worked on a project called Push Tech Kosh. I don't know how to- Yeah, ma'am. Yeah, it And- was that project only. Yeah, and you also contributed on the front end and the integration part, right? So for our all the coder viewers out there, tell us a little bit about the project, what all things and concepts that you applied in, and how has that project helped you in your understanding of coding concepts? इट वॉज वन ऑफ माई मेजर प्रोजेक्ट जिसमें एग्जैक्टली वर्किंग कई बार होता कि इंसान कोड देख लेता है इधर उधर से, बट ये था कि वी हैव रिटन एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो द प्रोजेक्ट इज अबाउट द सीमलेस कनेक्शन बिटवीन द डोनर्स एंड द नीडी ऑफ बुक्स. लाइक इफ अ डोनर, a person who has a book and he has read it and doesn't want it right now, so मतलब बड़े बड़े लोगों के पास ऐसे स्पेस पड़ती है, फिर लोग ऐसे बेच देते रद्दी में ऐसे करके. तो what donors can do is they can post their books of details about them and it will be like अगर एक यूजर ने लॉग इन किया है एंड वो डोनर है तो उसके जो डोनर वाली विंडो है उसमें दिखाएगा कि उसने क्या क्या लिस्ट किया हुआ है, एंड जो नीडी है उसको क्या दिखाएगा कि उसके एरिया के अराउंड जितने भी डोनर्स हैं उन लोगों ने लिस्ट किया है, उसमें से इफ एनी बुक द नीडी वांट्स तो ही और शी कैन रिक्वेस्ट. एंड उसमें हम लोगों ने ये अप्लाई करा था कि इट विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. लाइक अगर एक बुक है पोस्ट किया, डोनर ने करके छोड़ दिया एंड उसके बाद उसमें बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी, तो इट विल बी काइंड ऑफ कि टाइम स्टैम्प के बेसिस पे आप अलॉट करो. यू कैन कॉन्टैक्ट कि आपस में कि आपको लेनी है नहीं लेनी है, यू कैन कॉन्टैक्ट एंड आप उससे जाके मिलके ले लो जैसे. एंड अगर आप ले लेते हो इफ द नीडी वांट्स दैट कि हाँ करना है, तो यू कैन लाइक आफ्टर रिमूव दैट बुक फ्रॉम दैट डोनर पेज, एंड इफ नहीं लेना है तो इट विल बी अलॉटेड टू द नेक्स्ट पीपल हु हैज रिक्वेस्टेड इट आफ्टर दैट. And it also has a e-learning platform. If like अगर एक कोई बुक अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे जो नीडी को चाहिए, तो he or she can connect to the digital libraries for the e-learning part. Oh, great! That is a great. Seems like an interesting project, Parul. So, like tell us this कि इसका जो पूरा application process है, मतलब is it open throughout the year? आप कभी भी apply कर सकते हो या फिर कुछ मतलब एक special window में ही खुल जाएगी? Ma'am, this for DESIS this whole program, mentorship program. Yeah, ma'am, it opens for a specific window only for 20-25 days, and as its last date was 3rd of September only, so the applications are now closed. अच्छा, तो अब close हो गई है इसकी application? Yeah, ma'am. ठीक है, cool. And you also mentioned that you guys get stipend for this. So can you tell us कितने पैसे मिलते हैं इसमें? मैम 50,000 मिलते हैं एंड लाइक हमारे पास आए थे 1,000 कब, सो आई कैन टेल 49,000 आए थे. डोंट नो व्हाई, कुछ हुआ है लाइक होता है ना कि कुछ कॉस्ट करते हैं. 49,000 की बात. Great. That is, I think, an amazing, amazing thing, or maybe an inspiration. If people are thinking, they should definitely check out this, because if you are also getting to learn from, mentors who are working in such a prestigious organization, और आपको साथ में पैसे भी मिल रहे हैं, तो why not? That is great. So, Parul, apart from this, you are still in college, like you're in final, like you're in third year of your college, and Yeah, apart third from specific program, you also do a lot of other hackathons that you mentioned, right? So, Yeah. can you tell us, as a college student, मतलब आप academics और ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर पाते हो, और कैसे आप टाइम निकालते हो? लाइक आई एम प्रीटी श्योर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी करते होगे काफ़ी, राइट? तो DSA के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉलेज के एकेडमिक्स के लिए, हाउ डू यू मैनेज टाइम? और एक कॉलेज का बच्चा जो कि कॉलेज में अभी है सेकेंड थर्ड ईयर में, और वो भी कोडिंग ही सीखना चाहता है, तो वो भी कैसे टाइम निकाल सकता है? Okay, ma'am. So basically, starting ki like I am so studious from my 11th 12th class only. My parents are so strict, so that always say that पढ़ लो wala scene. So yeah, as I come in college, so
starting in third semester, I didn't realize कि college studies as a B.Tech student everyone knows कि एक दिन पहले ही पढ़ते हैं सब. To be honest, कुछ भी हो जाए, classes में attendance compulsory थी, तो third year में उतना नहीं idea था, तो it was so difficult to manage. So then I only did DSA and थोड़ा बहुत development जो करा था summer vacations में I polished that. But after that like ये mentorship शुरू हुई, I learned something. तो फिर क्या हुआ कि रात को 2-3 बजे तक तो पढ़ना हो ही जाता है, सब होता है. तो मैनेजिंग में इज लाइक कि मैम आई वुड सजेस्ट एवरीवन वाचिंग आउट दिस वीडियो और समथिंग कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अगर थोड़ा सा भी कर लिया ना तो यू विल फील वेरी लाइट. एक्चुअली आई डिड एवरीथिंग दिस इन सेकेंड ईयर ना, सो आई जस्ट क्रैक द अमेरिकन एक्सप्रेस राइट नाउ. मतलब अगस्त में मैं फ्री हो गई कि अभी है कि आई एम जस्ट that you have cracked? Yeah, it is in summer. Yeah, it is summer internship. I have cracked the American Express, but yeah, currently I'm looking for something more off campus. It was on campus, so I'm just looking something more. कि अगर कुछ opportunities which are more than that, so I'm also looking for that. Like it's कि अब now I'm tension free कि जो करना है I can explore anything. So I would suggest कि अगर आप like it's not every time it's too late. Some people still come to me कि Parul, it's now third year, haven't started anything. So it's not late to be start. You have to be just consistent. And अगर आप time management करो 1 hour 2 hour to DSA and 1 hour 2 hour to development, तो तब भी हो जाएगा. In 6 months you can achieve and get to a good level. But only thing you have to do is the consistency part. And like in hackathons, I say, as you asked, that these are so interesting things. तुम अपने ideas सुनते हो, किसी और के ideas सुनते हो, तो एक होता है ना कि दिमाग खुलता, thinking approach बदलती है. तो उससे क्या होता है ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट अबाउट डीएसए पढ़ लिया, 2-4 क्वेश्चन कर लिए, उसी को ऐसे पढ़ के चले गए तो हो गया. बट अगर आप किसी की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी सुन रहे हो तो आपको समझ आ रहा है कि उसे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. अगर आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो कई बार होता है कि अगर आप इफ यू आर नॉट एबल टू लाइक गेट इनटू अ गुड टेक, मतलब बहुत टेक जाइंट, बट यू कैन वर्क इन दी स्टार्टअप्स अगर आप डेवलपमेंट जानते हो. तो इट्स नॉट ऑलवेज कि हाँ, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो लेट स्टार्ट करते हैं एंड दे थिंक कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता. तो इट्स नॉट लाइक दैट. Start if you are not getting into ma'am, it's very common that some every time like people lag in DSA. बहुत ज़्यादा हो जाता है कि बहुत कम लोगों को ही समझ आती है. कई बार होता है कि नहीं हो रहा, I will not be able to do. But the only thing is कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है. It's not always harder. Sometimes it happens with me too. कई बार I sit like staring at the question only. कि 1 घंटा हो गया, अप्रोच ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्या करूँगी, कुछ नहीं होगा. बट देन आई गेट टू आई सपोर्ट सजेस्ट कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो व्हाट आई डू इज कि फर्स्टली आप ट्राई करो, नहीं समझ आ रहा तो 15 to 20 मिनट्स के बाद आप एक बार देखो कि आप क्या कर सकते हो. अगर अप्रोच भी नहीं क्लिक हुई, इफ अप्रोच क्लिक हो गई तो देन इफ आर नॉट एबल टू राइट द कोड फॉर दैट, तो लीड कोड पे ऐसे सोल्यूशंस होते हैं या जीएफजी पे कमेंट्स में लोग सोल्यूशंस डाल देते हैं. तो यू कैन जस्ट रीड फ्रॉम दैट डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस. वहाँ पे बहुत तरीके के होते हैं. So you can read from that, and after that, without copy pasting or like seeing the code, you can just try to implement it by your own. And if code देख के भी नहीं समझ आ रहा तो I would suggest कि just write that question name on the YouTube. जो मतलब एक सिंगल वीडियो तो होगा ही होगा उस क्वेश्चन के ऊपर, कोई ना कोई एक्सप्लेन कर देगा अप्रोच आपको, and then you can try to write that code again. And for the time management thing, I would say कि in my second year मैंने कोई मस्ती नहीं करी. मैं नहीं कहूँगी कि मस्ती नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए. आई रिग्रेट दैट कि नहीं करी, बट हाँ मैंने नहीं करी. तो आई मैनेज्ड ऑल दोज थिंग्स की मेंटरशिप का भी करना है, क्लास का भी करना है, असाइनमेंट भी करने हैं, पढ़ना भी है. तो आई जस्ट डिड ऑल दोज थिंग्स. बहुत ज़्यादा से घूमने फिरने में नहीं रही. Amazing. That is amazing piece of advice, Parul. I think what you also followed made quite sense. Like आप first year में हो तो थोड़ा explore कर सकते हो what all interest you have, like आपको क्या चीज़ में कुछ आगे करना है. And then in second year you can get a little bit more serious. You can start exploring even more. आप जहाँ पे भी आपको interest है उसमें fully 100% focus के साथ पढ़ाई कर सकते हो. And then third year तक आते आते if you have done it that well, आप काफ़ी chill हो जाओगे क्योंकि you will have one internship or something lined up. So about this American Express internship, Parul, you have cracked it from your college itself or was it an off-campus thing? No, ma'am, it's on campus right now, but currently I'm also looking for the off-campus opportunities to get something great. Great. ठीक है Parul, thank you. I think it was a pretty much good informative video about how you can actually get started with this program. If you guys are still in college and especially if you are a woman and you are looking out for such opportunities wherein you can
learn with the industry mentors, and work on great projects, then definitely check out such opportunities. I will put the link of this program in the description below. You can just go ahead and see through it. And yeah, that was all from my end. Parul, anything else that you would like to say to our viewers, or then we can Yeah. Ma'am, I would like to say only this thing that what I have seen right now with me is कि लक बेस्ड भी चीजें होती हैं, टू बी ऑनेस्ट होती हैं, लाइक इन द इंटर्नशिप सीजन्स आई हैव सीन दैट पीपल who knows coding less than me or something else are getting good stipend more than me, like more than me. And sometimes it happens like ma'am, in one of my like experience I'm sharing in the Salesforce, I have just done 2.6 test cases, but I was not able to crack it. I didn't got the mail for the interview. I was so disheartened. I started crying कि हो ही नहीं रहा, अब तो कुछ नहीं होगा. And people who had done less than me, like coding test cases कम पास हुए थे, they got the mail. So it's something like कुछ होता है. And on campus तो काफी थोड़ा सा हो जाता है luck based. So I would suggest all the viewers and something कि कई बार आपके हार्ड वर्क भी होते हैं, बट कई बार लक बेस्ड चीजें भी होती है, तो डू नॉट गेट डिसहार्टेंड टू क्विकली. हार्ड वर्क करते रहना है, यू विल गेट समथिंग. मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क वेस्ट जाता है. अगर Definitely. नहीं हो रहा तो इट्स कि बी पेशेंट, बी कंसिस्टेंट, you will definitely land into something good and something much more better than that is written for you. It's not that ki every opportunity is for you. Sometimes you will be able to crack it and sometimes not. So it's not that कोई ना कोई opportunity तो आपके लिए बनी हो. Amazing. I think that is amazing piece of advice, Parul, because as much as luck is important, hard work is even more important. If you're putting even 80% of the hard work, luck will be there for you. I mean, Yeah, anyone who exactly. is like sitting to 10 to 15 companies, that person is more having more exposure to luck anyway, right? So Yeah, exactly. great. ठीक है पारुल, thank you so much for taking out time to do this with us. I hope people watching this, especially women who are watching you right now, they get inspiration from you and get started with their coding journey as soon as possible. And I will put the link of Parul's LinkedIn profile in the description below. If you guys have any questions, you can just reach out to her on LinkedIn. She will be happy to help. And yeah, thank you so much, Parul. So that is it for today's video, guys. I hope you all liked it with Parul. You find inspiration from her and start coding as soon as possible. And if you guys are new to the channel, then don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. And if you are still interested in learning coding, just go to our website and take the skill eligibility test. That test will help you identify which course is best for you, be it one stack or Java full stack. Both the courses have amazing instructors from top IT companies to mentor you throughout your journey. So just go to the website and register for the test. If you have any doubts, you can reach out to us. If you guys are new to the channel, then don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. And if you guys have any queries, do let us know in the comment section below. We will be happy to cover them in our next video. Thank you so much.